अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग अनदर प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। सो न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स टू विच न्यूक्लियाई आर सब्जेक्टेड एंड द पैरिटी को हम देखेंगे कि ये एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है। सो आई थिंक हमने उसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, वो हम देख लेंगे। सो क्या कहता है कि the concept of statistics in physics is related to behavior of large number of particles as we have already studied in classical mechanics। जब हम एक गैस को सॉल्व करते हैं ना, जो velocities and energies of a gas in a cylinder, हम उसको सॉल्व करते हैं तो हम उसके ऊपर क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं और हम रिलेट करते हैं velocities and energies को to the pressure and टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है। तो क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं। कहते हैं properties of assemblies of photon, electron, proton and neutron and atomic nuclei cannot in general be described on the basis of classical statistics since they are not classical particles। ठीक है। And two new form of statistics have been devised based on quantum mechanics, and these are Bose-Einstein statistics and Fermi-Dirac statistics. The question of which form of quantum statistics applies to the system of particles of a given kind is linked to the particular property of the wave function. So if the wave function is symmetric, that is the wave function, if you flip the coordinates and spin, the wave function will retain like it's a mirror of mirror form of its form is like mirror to its reflection. So like for example, if I show you from the Google, um, so this function that you see, this metric function, if you see this is along x-axis। ठीक है। so मतलब एक सिंगल कोऑर्डिनेट के along है, बट अगर आप उसी तरह थ्री डायमेंशन में एक्स वाई जी एंड स्पिन को भी रखें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर हम देखें तो एक वेव फंक्शन जो कि अपना एक्स एक्सिस के लेट्स से एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। सो अगर हम इसका राइट और लेफ्ट देखें तो दे आर मिरर रिफ्रैक्शन ऑफ ईच अदर। सिमिलरली एंटी सिमेट्रिक में देखें तो इट्स ऑपोजिट। सो वट एवर is the wave function on the right side is the opposite on the left side। ठीक है। तो ये एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। so we know that the wave function of so these are the property has to do with the effect of wave function on interchanging all the coordinates of the two identical particles, say of two protons or protons in a nucleus. So if you exchange two protons which are two identical particles, so if you interchange those, what happened to the wave function? It's symmetric, which it is not. So like the wave function of two protons or neutrons is anti-symmetric. So similarly, the wave function of photon is symmetric। ठीक है। So a nucleon is described by a function of three spatial coordinates and a value of spin, whether it's half h bar or minus half h bar as for the electron। the Fermi-Dirac statistics apply to the system of particles for which wave function of the system is antisymmetric। ठीक है। so Fermi-Dirac हम अप्लाई करेंगे जिनमें वेव फंक्शन जो है एंटीसिमेट्रिक है। तो एंटीसिमेट्रिक सारे फर्मियंस के लिए एंटीसिमेट्रिक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे जो हैं ये फर्मियंस हैं। तो इनके लिए इफ यू एक्सचेंज द स्पेशल एंड स्पिन कोऑर्डिनेट्स, द वेव फंक्शन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन अगर आप उनको एक्सचेंज करते हैं, सो व्हाट हैपन टू देम is that their wave function gets become anti-symmetric। It follows from this property of the wave function that each completely specified quantum state एक यूनिक क्वांटम स्टेट जिसके लिए सारे कोऑर्डिनेट्स और स्पिन सबकी वैल्यू यूनिक है, दिस कैन ऑक्यूपाई ओनली वन पार्टिकल। ठीक है। वन पार्टिकल, वन फर्मियन। ठीक है। and according to the Pauli exclusion principle, so Pauli exclusion principle के मुताबिक fermions can only occupy one completely unique set of coordinates वाली जो state है उसको एक fermion जो है वो occupy कर सकता है। they follow the Fermi-Dirac statistics।
It has been deduced from the experiment electron, proton, neutron obey Fermi-Dirac statistics. So do all the nuclei of odd mass number. अच्छा, अब यहाँ पे एक नई बात यह है कि वो सारे न्यूक्लियाई के जिनका मास नंबर ऑड है, they will also follow Fermi-Dirac statistics. If you remember from Green, हमने ये पढ़ा था कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम J है उसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ इंटेग्रल होती है ऑड ए मास नंबर के लिए, और इवन ए के लिए वो इंटेग्रल होती है. सो अगर आप देखें तो जे जो है जब यानी तो हमारे पास ऑड ए न्यूक्लियाई होंगे, तो जे हमारे पास स्टिल एक अनपेयर्ड प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा. सो वो जो अनपेयर्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो मोस्टली उस न्यूक्लियाई का जो एंगुलर मोमेंटम है उसको डिटरमाइन करता है ना. सो वो जो स्टैटिस्टिक्स फॉलो कर रहा होगा वही पूरा न्यूक्लियस फॉलो करेगा. ठीक है, तो अगर मैं आपको फॉर रेफरेंस आई विल शो यू दी एग्जैक्ट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ये हमारा टॉपिक था न्यूक्लियर न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी में. सो हमने पढ़ा था कि जो ऑड ए न्यूक्लियाई हैं, so odd a nuclei have I, that is the spin of the nucleus, which is total angular momentum of the nucleus. ठीक है, so I is total angular momentum of the nucleus, it is denoted by I. ठीक है, J जो है वो पार्टिकल का है और I जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम है. so it's a half, it's odd a nuclei के लिए हाफ है. so यानी हमारे पास कोई अनपेयर्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. so this will follow Fermi-Dirac statistics. And similarly for the nuclei that are even, I will be integral. ठीक है, क्योंकि वो जो जेस हैं वो कंबाइन हो जाएंगे. सो आपके पास सारे पैड होंगे, जो आपके हाफ इंटीग्रल जो है वो सम अप हो जाएंगे, जो आपके पास इंटीग्रल स्पिन होगी. तो ये जो फिर न्यूक्लियाई हैं दे विल फॉलो Bose-Einstein statistics. Two or more particles may be in same quantum state for boson या Bose-Einstein statistics. जब बोसोन की नॉर्मल एग्जांपल आपके पास फोटोन है या सारे जो मीडिएटर हैं ग्रेविटॉन जो कि एग्जिस्ट नहीं, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी वो डिस्कवर नहीं हुआ. सो ये जो फोर्स मीडिएटर्स हैं दे आर बोसॉन्स. बोसॉन्स का जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक होता है. दैट इज इफ यू इंटरचेंज द कोऑर्डिनेट्स, their wave function is merely the reflection of one part on the other part. So it does not change sign while all the coordinates in any pair of identical particle is interchanged. Two or more particle may be in the same quantum state. तो ये more than one particle in same quantum state हो सकते हैं. इनके लिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें. All nuclei having even mass number A obey the Bose-Einstein statistics. ठीक है, तो अब इवन मास नंबर वाले क्योंकि वो पेयर्ड होंगे, उनका आई जो है वो एक इंटेग्रल होगा. ठीक है, तो उसके लिए वो सारे क्या करेंगे, तो Bose-Einstein statistics को फॉलो करेंगे. देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमने देखा क्या कोरिलेशन है. दैट द टोटल एंगुलर मोमेंटम इफ इट इज इंटेग्रल, तो पार्टिकल जो है वो बोज आइंस्टाइन को फॉलो करेंगे, और अगर इफ इट्स हाफ इंटेग्रल दे विल फॉलो Fermi-Dirac. So Fermi-Dirac particles odd A have total nuclear angular momentum which are odd half integral multiples of h by 2 pi, while Bose-Einstein even A have momenta which are integral multiple of h over 2 pi. ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पे इसने ब्रीफली थोड़ा पैरिटी के बारे में बताया जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. इसको हम देख लेते हैं यहाँ से. मे बी वी वर लाइक वी मिस्ड द फॉर्मूला ऑफ पैरिटी एंड एंगुलर मोमेंटम. सो इसको हम देख लेते हैं. टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन द वेव फंक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस मे बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ इट्स स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड फंक्शन ऑफ space coordinates and a function depending on the spin orientation. The motion of the nucleus is said to have even parity if the spatial part of the wave function is unchanged with this is unchanged when the space coordinates are replaced by this. So like we know what parity is as you like change the spatial part of the coordinates what happened to the nucleus. So हम कहते हैं कि अगर तो उसका जो वेव फंक्शन है इट लाइक रिटेन इट्स फॉर्म तो रिटेन करता ही है विद इट्स सेम लाइक प्लस साइन, और आप वेव फंक्शन जो है वो अगर सेम रहता है तो हम कहते हैं कि पैरिटी जो है वो इट हैज़ अ इवन पैरिटी, एंड इफ चेंजेस साइन और तो हम कहते हैं कि उसकी ऑड पैरिटी है. सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू द रिफ्लेक्शन ऑफ न्यूक्लियस पोजीशन about the origin of XY system of coordinates. ठीक है, तो न्यूक्लियस की पोजीशन जो है उसको हम अगर लाइक इस तरह
रिफ्लेक्ट करते हैं तो व्हाट हैपन टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यूक्लियस. सो द मोशन ऑफ द न्यूक्लियस इज said to have odd parity अगर आपका रिफ्लेक्शन जो है changes sign, and if it doesn't it has an even parity. It has been shown So it has been shown that the parity of a nucleus in a given state is related to the value of orbital angular momentum L. ठीक है, कैसे related है? That the parity is equal to -1 to the power L. ठीक है, so -1 to the power L का मतलब है कि अब अगर parity L जो है वो even होगा, if L is even, parity is even, his -1 to the power even will be a positive number. And if L is odd, parity is odd. A system particle will have even parity when sum of numerical values of L for all the particle is even, and odd parity when sum is odd. Okay, so this is parity seem to have an abstract sort of property. The selection rules for many nucleus transition involving conditions on parity as well as on total angular momentum. So basically पैरिटी हमने जो मोमेंटा है मैग्नेटिक मोमेंट और इलेक्ट्रिक जो मोमेंट्स हैं उन मल्टीपल मोमेंट्स जो हैं उनके ऊपर उनमें हमने कुछ देखा था कि कुछ सिलेक्शन रूल्स हैं जो पैरिटी पर भी बेस करते हैं तो वो उनको उसमें हम इसको फर्दर जो है वो देखेंगे सो अभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए आपने इतना ही करना है सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर